Hello and welcome. So, last time we are done with this. Uh, so, we are in second topic and we are done with this first subtopic. Now, in today's lecture, we will start with the idea of elimination. और ये idea of elimination है क्या? What is this idea of elimination? So, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो लेक्चर्स को एकदम सिस्टमेटिक वे ढंग से देख रहे हो और देन मैंने बहुत बार ये बोला कि वी विल लुक एट हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टमेटिकली, राइट? सो अभी हम लोग सिस्टमेटिक वे ऑफ देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल लुक दैट हाउ टू सॉल्व system of linear equation systematically, right? Okay, now let's start with today's session. Okay, so this elimination is a method to systematic way to solve the linear equation. So हम लोग बहुत easy example से start करेंगे and we will look that. So let's start with the example where x minus the first equation is x minus 2y is equals to 1 and 3x plus 2y is equal to 11. So you know how to solve this equation, right? So अब मुझे आपको यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करने दो, दैट इज ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, राइट? ये मुझे नेक्स्ट टॉपिक में करना चाहिए था, बट लेट मी डू दैट, राइट? सो वी विल यूज़ एन ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स. तो सबसे पहले तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स होता क्या है? ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, राइट? सो वी नो how to write the matrix from this system of linear equation, right? So that is going to be the, if we take that matrix as A, अगर उसको हम assume कर ले कि वो matrix A है, so x का coefficient in first column, y का coefficient in second column. So यहाँ पे प्लस नहीं लिखना चाहिए मुझे. So this is matrix A. तो augmented का फॉर्म क्या होता है? आप सिंपली मैट्रिक्स ए को रख दो, एक वर्टिकल लाइन खींचो, उसके राइट हैंड साइड में जो है ना उसको भी आप लिखो, ऑग्यूमेंट कर दो, ठीक है? सो इस केस में ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का कैसा दिखेगा? सो विद दिस स्क्वायर ब्रेसेस मैट्रिक्स ए इज दिस वन and a vertical line with b, that is the right hand side of this equation, that is 111. पर्पस क्या है ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का? कि जब आप एलिमिनेशन अप्लाई करो ना तो सारा चीज़ एक साथ रहे. मतलब कि देखो, कोई भी इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी करोगे, राइट हैंड साइड में भी करोगे, राइट? सो मेन मोटो क्या है इस ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का कि जब भी हम एलिमिनेशन अप्लाई कर रहे हो, सो ऑल द थिंग्स आर एट ए प्लेस, राइट? तो मिस ना कर जाओ राइट हैंड साइड को. ओके, सो नाउ व्हाट दिस एलिमिनेशन टेल्स यू दैट, और आइडिया ऑफ एलिमिनेशन क्या है? टू प्रोड्यूस द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट? अब सोचोगे कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है. सो द आइडिया ऑफ एलिमिनेशन इज टू प्रोड्यूस द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. सो लेट मी राइट दैट ऑल्सो. द आइडिया ऑफ एलिमिनेशन is to produce the upper triangular matrix.
नाउ okay, now let me write down this matrix, augmented matrix, that is 1 3 minus 2 2 with the vertical line 1 11, right? So सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या करते हैं ना कि वी चूज अ पिवट। तो ये पिवट क्या होता है, आप सबसे पहले रो में जाओ, दिस इज़ द फर्स्ट रो ऑफ योर मैट्रिक्स, राइट? सो फर्स्ट रो में पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा ना उसको आप एज ए पिवट पिक करो। एंड वाई वी आर चूजिंग इट एज पिवट, that I will tell you. So in this case, this is the first row, right? And the first non-zero element is this one. So we are going to pick this as a pivot. So this we call the pivot, right? And this pivot can't be zero. Can't be zero. ये जीरो नहीं हो सकता पिवट आप अगर कोई एलिमेंट यहाँ जीरो है सो यू कैन नॉट कंसिडर इट एज पिवट, राइट? ओके, नाउ यूजिंग दिस पिवट व्हाट वी विल ट्राई टू डू, अंडर दिस पिवट whatever the elements we have under this pivot we will make all those elements zero. एक बार मुझे आप फिर से बोलने दो, इस पिवट को मैंने चूज किया ना तो इसके नीचे जो भी एलिमेंट्स होंगे ना उनको सारे को मुझे जीरो करना है, राइट? सो इसका भी वे है कैसे करेंगे हम जीरो, ठीक? तो इस केस में देखो आप, अगर आपने इसको पिवट लिया है, नाउ दिस शुड बी जीरो एंड हाउ व्हाट ऑपरेशन विल मेक दिस एलिमेंट जीरो, right? So for that उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि we will have a multiplier, right? So let me multiply. So देखो आप, सीधी सी बात है कि एलिमिनेशन, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग द एलिमिनेशन। आप लोग जानते हैं कि कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, राइट? व्हाट वी डू, वी जनरली अगर जैसा हम लोगों ने पढ़ा क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? एंड दैट विल बी 3x एंड हियर देन सब्ट्रैक्ट इट, देन दिस विल गेट कैंसिल। सो व्हाट वी आर डूइंग द एलिमिनेशन। इन फर्स्ट स्टेप वी विल remove this x, right? And then we will left with this term y only, and from there we will find the y, then after that x. So this is how we used to do, and that is the exact thing that we are doing here also, right? So main idea क्या है, इसको जीरो करना है, right? So that means कि in second equation we are रिमूविंग दिस टर्म। सो अगर एक टर्म बच गया तो यहाँ से आप y फाइंड कर सकते हो। दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस एलिमिनेशन, राइट? तो ये मल्टीप्लायर क्या है ना, मल्टीप्लायर ये है कि देखो सबसे पहले तो मुझे आप मल्टीप्लायर लिखने दो क्या है। सो डिवाइडेड बाय पिवट रहेगा, यहाँ जो भी आप पिवट चुने हो वो नीचे रहेगा इन डिनोमिनेटर, और ऊपर में क्या रहेगा जिसको एलिमिनेट करना है, राइट? सो द एलिमेंट दैट इज गोइंग टू बी रिमूव्ड, और यू कैन से दैट इज गोइंग टू बी द जीरो। सो मल्टीप्लायर, अभी एक एग्जांपल लेंगे तो देन यू विल अंडरस्टैंड। एंट्री टू एलिमिनेट, सिंपल सी भाषा में बोले तो मल्टीप्लायर क्या होगा,
जिसको जिसको एलिमिनेट करना है वो ऊपर रहेगा, ठीक, और डिवाइडेड बाय जो आपने पिवट पिक किया है वो नीचे रहेगा, ठीक है। देखो इस रो में इसको जीरो करना है, ठीक है, तो आपका मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप मल्टीप्लायर निकालो, किसको मुझे जीरो करना है, तो 3 को जीरो करना है, राइट। सो 3 जो है वो न्यूमिनेटर में रहेगा एंड दिस pivot will be in the denominator, right? So your multiplier, और आप कौन से एलिमेंट को रिमूव कर रहे हो, सो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, राइट। सो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जस्ट टू इंडिकेट दैट ठीक है। तो आपका ये मल्टीप्लायर मिल गया, डैट मीन्स कि आप क्या करोगे, आपने फर्स्ट रो को एज इट इज छोड़ दिया 1 - 2, राइट। फर्स्ट रो को एज इट इज छोड़ दिया, सेकेंड रो की जगह आप क्या रिप्लेस कर रहे हो, तो लेट मी राइट डाउन ऑल्सो। सो व्हाट यू आर डूइंग इज दैट आप सेकेंड रो की जगह, सो सेकेंड रो की जगह आप सेकेंड रो माइनस दिस मल्टीप्लायर इज 3 times r1. So in place of second row, this is what you are going to do, right? So r2 is 3 minus 3 into r1, that is 1, right? So here we will have 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, r2 is 2 and plus 6, so 3 times 2 is 6 plus 2, that is 8. So here we will have 8 and ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, so r2 is 11 minus 3 times 1, so 8, right. Now so this is our pivot, right. And now if you see this system of equation, so this is in ये कन्वर्ट हो चुका है, दिस नाउ हैज़ कन्वर्टेड इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलते हैं कि इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स द अपर पार्ट और इन द ट्रायंगुलर पार्ट ऑल द एलिमेंट अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रायंगुलर पार्ट, सो जो भी एलिमेंट्स that are apart from, that are not in this triangle part will be 0, right. If you see this triangle, right, and apart from this triangle all the elements will be 0, so that is what we call the upper triangular matrix, right. So the idea of elimination is to produce this upper triangular matrix by doing such kind of operations, right. So we will take numbers of example, right. So you do not have to worry that अभी भी मुझे समझ में नहीं आया है, right. जैसे अभी आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम मैंने कितने सारे एग्जांपल्स लिए सिर्फ एक चैप्टर में, right. So just look at this, note all the points, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप भी सॉल्व करो, you will have good idea about the linear algebra, right. Okay, now you see that you can call this matrix as U, right. और ये मैट्रिक्स क्या था मेरा, यहाँ पे ये मैट्रिक्स ये A था, right. So आप ये देखो कि दिस मैट्रिक्स A has been converted into some other matrix U, right. And let's assume that ये B है मेरा, right. And there is change in this B also, right. And let's call this after changing that has become C. So you see after the elimination your system of equation was AX is equals to B
Now what you have done, you have applied this elimination. अब जो है आपका सिस्टम u x इज इक्वल टू सी हो गया. तो अगर आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखोगे इन दिस केस, राइट, सो देन व्हाट यू विल गेट, x minus 2y is equal to 1 and 8y is equal to 8, right? So you see this system of equation, this system of linear equation and this system of linear equation, these two are completely different, right? If you look at the row picture and the column picture, both is different, but what is the same thing is this solution x. So the solution for this system of equation and this system of equation are going to be the same. So solution for the both system of equation will be same, right? So do you, आप चाहते हो मुझे कि मैं आपको इस, तो आप देखो ना, आप सिंपल क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे ना. ऐसे हमने देखा था कि इसका ग्राफ कैसा था. सो समथिंग आई डोंट नो, मे बी लाइक दिस, कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा था 1 3 पे शायद या 3 1 पे, आई डोंट रिमेंबर इट, बट ये रो पिक्चर है. अब ना इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आप रो पिक्चर देखो, दैट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट? सो समवेयर y इज इक्वल टू 1 एंड मे बी एक और स्ट्रेट लाइन होगा, राइट? सो you see that the row picture has completely got changed, and even if you look the column picture, the vectors here, right, and this vectors, so column picture is also getting changed, right? और बच क्या रहा है सेम. सो सॉल्यूशन जो है दोनों का सेम होगा, मतलब जो पॉइंट इन दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और जो भी सॉल्यूशन होगा इसका, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, दैट सेम सॉल्यूशन वुड बी फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑल्सो, राइट? सो दैट इज दिस इज द पॉइंट दैट आई हैव रिटन हियर, दैट द सॉल्यूशन फॉर both system of equation will be same, right? So the first step was to convert this system of linear equation to upper triangular form, and how we have done, so now we have this upper triangular form. Now the next step, so you have this system of equation in upper triangular form, that is 1 minus 2 0 8, right, and we have 1 or 8, so that is u c. so अब जो है आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो गया, u x इज इक्वल टू सी. तो आपको कुछ नहीं करना, अब आपको बैक सब्स्टिट्यूशन करना. सबसे पहले तो आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख दीजिए फॉर दिस मैट्रिक्स. सो दैट विल बी x माइनस 2y is equal to 1 and 0 plus x, that will be 0, and 8y is equal to 8. Now what you do is the back substitution. So what do I mean by back substitution? So it is nothing, backward way में सॉल्यूशंस को फाइंड करना है. फर्स्ट क्या करोगे आप, देखो नाउ ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिंपल बन गया है, यहाँ से आप डायरेक्टली y फाइंड कर सकते हो पहले. सो दैट इज़ व्हाट वी आर कॉलिंग इट बैक सब्स्टिट्यूशन. फर्स्ट we are going to find this y. After finding this y, we are going to use this y to find this x. That is what we are calling is the back substitution. So from here y is equal to 1
and this x we can do the back substitution here. X minus 2 into 1 is 1, so x is equal to 3. So now we have this solution. और ये जो सेम सॉल्यूशन जो है जो यू एक्स इज इक्वल टू सी को सेटिस्फाई कर रहा है, अभी जस्ट हम लोग ने देखा कि because we are solving the same system of equation, so that solution will also satisfy to this, right? Now there are some points जहाँ पे आपका एलिमिनेशन वर्क नहीं करेगा. So elimination doesn't work always, right? So we will look now the breakdown of elimination. कहाँ पे elimination breakdown करेगा, right? So let's look at this breakdown of elimination. 3 points है that you should keep in mind, और वो डायरेक्टली इंट्यूटिव है, मतलब ऐसा नहीं कि उसको आपको याद रखना पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है. देन आफ्टर दैट वी विल डायरेक्टली जंप टू द problems and we will solve lot of problems. Okay, now let's look at where we will have breakdown of this elimination. That means where we will, at what condition or at what type of system of linear equation we will be not able to proceed with this elimination method, right? अदर इफ और क्या कंडीशन हो सकता है कि अगर मेरे पास हम प्रोसीड नहीं कर पा सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, डू वी हैव एनी फिक्सेस, क्या अदर वे है उसको फिक्स करने का टू प्रोसीड विथ एलिमिनेशन. सो वी विल लुक ऑल दिस थिंग. तो सबसे पहला कंडीशन जो आता है ना जहाँ पे ये एलिमिनेशन ब्रेक डाउन कर जाएगा, दैट इज़ विद परमानेंट फेल्योर, मतलब वी कैन नॉट प्रोसीड विथ फर्दर एलिमिनेशन मेथड, राइट? तो दैट इज़ द परमानेंट फेल्योर. तो परमानेंट फेल्योर विथ नो सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन के केस में यू कैन नॉट प्रोसीड विथ दिस एलिमिनेशन मेथड. तो वाई वी विल लुक एट द फर्स्ट केस. आप एज्यूम करो कि आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है दैट इज एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 1 एंड 3x minus 6y is equal to 11. So if you see these two equations, they are parallel, right? Right, because हाँ दोनों पैरेलल है, दोनों लाइन जो है पैरेलल है, ठीक है. इफ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल देन you will not have solution in this case, right? So if you have to write the augmented matrix of this equation, of this system of equation, so that will be 1 3 and minus 2 minus 6 vertical line 1 11, right? And the first step is if you are going through the elimination method, then the first step is to make this system of equation as a upper triangular, and for that what we will do, we will pick our first pivot. So that is the first pivot. Okay, in last lecture we have two pivots, right? That is the first this one, and the second pivot will be this one. So right, so in this case the first pivot is this one. So next step is to eliminate or make zero all the elements that is below this pivot, right? So we are going to make this element as 0, and for that we will first find the multiplier, right? So multiplier is nothing but that value, that multiplier will get multiplied with the first row. So let me first do that. So the multiplier that would be, let's assume that we are denoting that multiplier with L, and हम लोग इसको डिलीट कर रहे हैं, इसको मेक 0 कर रहे हैं ना. So that is at the third row, sorry, second row, first column, right? And that multiplier value would be in the numerator. Which element we are making 0? 3. So 3 will be at the numerator, and in the denominator what is the pivot? So pivot is 1, so that will be
in the denominator. So now what we will do, we will apply this operation. So in place of r2 we are going to put r2 minus multiplier is 3 times r1. So this multiplier will get multiplied with this first row, right? And after multiplying that, we are going to subtract that from row 2, right? And that is going to replace in the row 2, right? So now the first row will be as it is, right? Now here we will have 3, that is this one, minus 3 times r1 is 1, right? So that will be 0. So 0. Now for this position we have minus 6 minus 3 into r1 is minus 2, so here we will have plus 6, so that is going to be 0. And here also we will have 0. Do that. 11 minus 3 into r1 is 1. Sorry, here we will have 8, right? Because 11 minus 3 is 8, right? Now but the next step, so now we have this first pivot, right? But you see, in this case we do not have the second pivot because this 0 cannot be pivot, right? 0 will never be pivot. You cannot make 0 as a pivot, right? So that means you cannot further proceed with this elimination method. That means the and इसके अलावा आपके पास you do not have any other alternative to proceed further with the elimination. That means कि permanent failure हो गया है elimination का, breakdown हो गया, right? So किस केस में हो रहा है? When you have no solution. And how, अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं कि नो सॉल्यूशन कैसे है. तो लेट्स लुक एट दिस. सबसे पहले आप नाउ डू द बैक सब्स्टिट्यूशन हियर ऑन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. So we will have x minus 2y is equal to 1 and 0 times x plus 0 times y is equal to 8. So if you see this one, that is 0 is equal to 8, it is impossible, right? So none of, so that means the system has, in this case the system has no solution, or you can say system is inconsistent, right? Okay, now let's look at the second case where we will have this breakdown. Now this is the second case. Failure elimination will get breakdown when we have infinite many solutions. So let me proceed with an example. Let's suppose आपके पास system of equation है, that is x minus 2y is equal to 1 and 3x minus 6y is equal to 3. So you see these two equations both are same, right? If you multiply with 3 you will get this 3 times x plus minus 6y is equal to 3. So both lines are same. So you see all the points on these lines are going to get satisfy both the lines at the same time. That means in this case we will have infinite many solutions. But let's look why we have the breakdown of this elimination. Why we cannot proceed further with the elimination when we have infinite many solutions, right? So the first point is to write the augmented matrix. So we will have augmented matrix, this one, right? And the next step is to pick the pivot element, and pivot is going to be the, in the first row we will pick that element as a pivot which is non-zero in the first row, right? फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड रो में पिक करेंगे जो कि फर्स्ट नॉन जीरो पिवट होगा, बट पहला हम लोग फर्स्ट रो में ही पिक करते हैं. एंड डू नॉट वरी, वी विल सॉल्विंग विद द
for the 3 by 3 matrix also, so you do not have to worry. So now this is going to be the pivot, right? And below the pivot, the idea of elimination is to below the pivot make all the elements 0, and for that first we will find the multiplier. So we are going to eliminate this one, right? So multiplier for that will be, so how we are going to find the multiplier? The elements which we are going to eliminate will be at the numerator. So this is the element that we are going to eliminate, and the pivot will be at the denominator, right? So this 3 will get multiplied with the first row, and after multiplying we will subtract it from the second row. And if you have to write this thing that what I have said right now, so how you can write? So in place of R2 we are going to subtract this 3R1 from this R2. So now we will have, so the first row will be same, फर्स्ट रो में कोई कुछ चेंजेस नहीं आएगा. सेकेंड रो में आपको क्या करना है? सेकेंड रो की जगह सेकेंड रो में आप क्या करो? फर्स्ट 3, फर्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, 3 है, 3 माइनस 3 टाइम्स R1 कितना है? 1. सो 1 that will give you 0. Now you have -6, so -6 minus here you have 3 times R1, so that will be 3 times R1 is -2, so here we will have plus, so 0, right? Now 3, so that is 3 minus 3 times R1 is 1, so 1, 3 minus 3, that is 0, right? Now you see, this is the first pivot. Now in the second row, if you want to pick the pivot, do you find in the second row, do you find any element which is non-zero? No. In here, in second row हमारे पास पिवट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स जीरो है. कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि नॉन जीरो है. So that means we cannot proceed further with the elimination method. That means elimination has breakdown here, right? So in this case we will have only one pivot, right? And how we can see that we will have the infinite many solution? So again you can see from here, you can do the back substitution, right? So you will get x minus 2y is equal to 1, and from the second equation 0 times x plus 0 times y is equal to 0. So you can pick any any y here, right? And for, because that equation is going to satisfy for any value of x and y, right? You can pick any y that you will put here and you will get x. So you can pick infinite way, you will have infinite way to pick this y, right? And for that infinite way you will have infinite value of this x. So in this case you will have infinite many solution. And why this elimination has breakdown? Because to proceed further we cannot pick the pivots, right? So in this case, and elimination has breakdown. So yeah. Now the third case is temporary failure. मतलब कि इस केस में we can fix the elimination method, right? कैसे fix करेंगे we will see, right? That is why we are calling it as a temporary failure, because we can fix this, right? So temporary failure, right? So let me take an example. So let's suppose you have 0 times x plus 2y is equal to 4 and 3x minus 2y is equal to 4. Now if you have to write the augmented matrix, how you will write? So that it will be 0, 2,
3 minus 2, 4. Here we have 5. Right? So the first point is to pick the pivot, right? But you see that you cannot pick this as a pivot, right? So is elimination breakdown? No. What we can do, we can write this second equation as a first, right? So that means कि we can exchange these rows, right? So कहने का मतलब क्या है कि आप इस इक्वेशन को तो पहले लिख सकते हो ना, बाद में इस इक्वेशन को लिख दो एंड इस उसके अकॉर्डिंग आप ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लो, या नहीं तो आपको अगर डायरेक्टली विजिबल है देन इट इज़ ऑब्वियस दैट you can exchange these row, right? So you cannot pick this as a pivot, so this can't be as pivot. So to fix this, what we can do, we can do the row exchange. This row exchange is nothing, writing the second equation first and then the first equation as second. So we can have this 3 minus 2, 5 and 0, 2 and 4, right? Now we can pick our first pivot, that is 3. So you see below this pivot we have already 0, so we do not have to do anything. This system of equation is already in triangular form, upper triangular form, right? So from here we can directly apply the back substitution, right? So what we have done is we have replaced, so R1 को R2 से मैंने replace कर दिया है, that is what we are, this symbol is indicating. Okay, now we can do the back substitution. So that will give you 3 minus 2y is equal to 5 and 2y is equal to 4. So back substitution, what do you mean by back substitution? So first you find this value of y. So the value of y will be 2, and using this value of y you can find this x. So 3x minus 2 into 2 is equal to 5. So 3x is equal to 5 minus 4, that is 1, right? So not 1, that will be 9, right? So x is equal to 3. So we got this value. So in this case, this is why we are calling this temporary failure, because we can do the row exchange and we can proceed further with the elimination, and in this case we will have this 2 pivots, right? So that is about the idea of elimination. We are going to, in next video we are going to solve lot of question. So जितने भी और भी doubts होंगे आपके, that is going to be clear in next lecture, because we are going to solve lot of problem on this chapter. So अभी आपने देखा कि थोड़ा फास्ट गए, बिकॉज ये सब सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि इसमें कुछ समझाने वाला था. जो पॉइंट था पिवट के बारे में, जो मेन पॉइंट्स थे, फिर ये आप अप्लाई कैसे करो, सिस्टमेटिक वे कैसे है इस चीज़ को लिखने का, राइट, यूजिंग दिस मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर कैसे फाइंड करना है. तो आप स्टिक रहो इस मेथड के साथ. सो आपको फिगर इट आउट नहीं करना पड़ेगा कि ये कैसे लिखे. तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत सारे प्रॉब्लम 3x3 मैट्रिक्स को लेकर के. देन you will make yourself comfortable in this all this thing, right? So yeah, that is all about this chapter. We will, in next video we will be looking problem based on this idea of elimination. Then we will move to next chapter.